There you go. So I need to go to front end because that's where my React project lies. I'll just quickly start it over here, or I'll start it over here. Okay. Overall, here we have total of 5 pages or something. Okay. So not mention GitHub links in lecture. Are you talking about the GitHub? Acha, I guess you're talking about the GitHub repo link. And people who ever have attended the session anyway had access to it, right? So I didn't add it to the notes, but I'll add it today, probably. So I'm sure where it is. But I will find that and we'll just add it here. I think the name was Karen. This one, I guess. Hmm. All right, so let's continue. So we have total of 5 pages, right? And we have implemented, we have installed, and we have used Chakra UI. We have used React Router DOM as external libraries. React Router DOM we used for routing, Chakra for styling purposes, and we kind of have multiple pages. Yes, by using React Router DOM, we were able to do that. Now, basically login, unless and until a user logs in, he won't be able to access any of the pages. And the reason for that is basically we put private routes, right? So there's a component called private route, which checks whether the user is authenticated or not. How would you know how can we know whether the user is authenticated or not? Well, we kind of maintain that information in context API, okay, whether the user is logged in or not, or and the token details. We kind of maintain it over here, and if the user is authenticated, like we kind of maintain this information, and if the user is authenticated, we give access basically to that page. So that was the logic return over here in private route. Otherwise, we basically redirect. Navigate is a component which comes from React Router DOM, wherein you can write to, and whichever route that you write, the page will be navigated to that. So this is how we are maintaining private routes. And now, unless and until a user logs in and provide email and password, correct email and password, only then user will be logged in. So let's do that. So we kind of is using some fake API called regress.in. So if we provide this email and password, then we'll get this token back. Okay. So if you can see over here, let's go to components. Okay. So auth could, in login, basically. Here in login, we have two empty states currently. And if you see authentication currently is logged in value that we are consuming is false. Now, eve.hold@request.in and whatever the password is. So now when we click on login, a post request is made to this endpoint with this information, email and password, and we get some token back. And if you observe over here, we kind of saved that information in the context API. Is logged in true हो गया, token की जगह token आ गया. That means now we are logged in. Now, if a user is logged in, वो अभी लॉगिन पेज में फिर क्या कर रहा है? जनरली आप वेबसाइट्स में देखते होंगे कि जैसे ही यूजर लॉगिन पे क्लिक करता है, he gets redirected to home page, right?
सो इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर ऑल्सो, ऐसे यूजर जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता है वो लॉगिन से सीधा होम पेज पे चला जाता है। तो हमारे वेबसाइट में भी उस तरह का फीचर होना चाहिए कि वो लॉगिन पे क्लिक करे और अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो वो होम पेज पे चला जाए। तो फॉर दैट वी विल ऐड इट ओवर हियर। तो जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यह हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल होगा। हमने एपीआई रिक्वेस्ट डाली and we kind of are saving that information, and now ऑथेंटिकेशन में आपको लॉगिन फंक्शन मिल रहा है, उसके अलावा आपको ऑथ डिटेल्स भी मिलते हैं, राइट? सो लेट्स ऑल्सो कंज्यूम दैट। अभी ऑथ डिटेल्स, राइट, इज लॉग्ड इन अ टोकन, एंड ये दोनों ले लेते हैं ऑथ डिटेल्स। और डिटेल्स में भी हमको क्या चाहिए, इज लॉग्ड इन, ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? उसको भी डिस्ट्रक्चर करके हम उसमें से इज लॉग्ड इन वैल्यू निकाल रहे हैं। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर इफ इज लॉग्ड इन वैल्यू ट्रू है तो क्या करना चाहिए, रीडायरेक्ट यूजर टू होम पेज। चलो यूजर को रीडायरेक्ट करते हैं। हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी। रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी में इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी। क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग, यूज नेविगेट। हमने इसके बारे में कल भी पढ़ा था, राइट? एक हुक है यूज नेविगेट करके, जिसमें आपको एक फंक्शन मिलता है नेविगेट। अगर वो फंक्शन इन्वोक करोगे आप, सो नेविगेट नाम का जी ये जो फंक्शन है मैं इन्वोक कर रहा हूँ, एंड इसमें स्लैश पास कर रहा हूँ, दैट मीन्स नेविगेट गो टू होम पेज, रीडायरेक्ट यूजर टू होम पेज। ठीक है। नाउ अगर आप अभी ट्राई करोगे तो यू विल सी दैट इन एक्शन। तो लॉगिन कंपोनेंट पे है हम लोग, ऑथेंटिकेशन डिटेल्स और डिटेल्स इज लॉग्ड इन। लेट्स रीलोड वंस। ओके, फ्रॉम स्क्रैच फिर से करते हैं। इज लॉगिन, हाँ, ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, एंड या देयर यू गो। नाउ ठीक है, सो वी हैव ईमेल एंड पासवर्ड, वी क्लिक ऑन लॉगिन, एंड या इज लॉग्ड इन वैल्यू ट्रू हो गया, बट वी आर नॉट मूविंग टू होम पेज। क्यों? कैन समवन टेल मी क्यों? रिटर्न इज यूज फॉर नेविगेट कंपोनेंट, हम लोग यहाँ पे हुक यूज कर रहे हैं, यूज नेविगेट हुक यूज कर रहे हैं, राइट? कंसोल लॉग करके देखते हैं इज लॉग्ड इन वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर से रीलोड करते हैं। तो वो कभी इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं था। द रीजन इज दैट वी स्टिल इन दैट फंक्शन, राइट? ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन, दैट्स व्हेन द स्टेट गेट्स अपडेटेड। नहीं, ये पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर, राइट? विद इन दैट फंक्शन, इफ यू रिमेम्बर, इट हैज टू कंप्लीट द नेक्स्ट री रेंडर पे अपडेट्स होते हैं, राइट? अभी ये नेक्स्ट री रेंडर हुआ ही नहीं था ना, तो ये नॉट अ गुड आइडिया टू पुट इट ओवर हियर। तो इस टाइप में यू कैन पुट अ नेविगेट कंपोनेंट, और यहाँ पे कंडीशन लगाना इज अ बेटर ऑप्शन इन दैट केस। बिकॉज अभी आप यहाँ पे अगर लिख लोगे, एंड इफ यू से कि इफ is logged in value is true,
कभी भी रीरेंडर होगा तो ये वैसे भी कॉल होता रहेगा, राइट? So we can just say return navigate to slash. So in this way, even if re-render में भी कभी value change हो, तो we get to the exact place where we want to go. So you can see अभी it is moving to home page. So it's just all the things that you have learned so far, but you shouldn't forget the things. You shouldn't forget the fundamentals, you know. So whenever state gets updated, right, it gets updated in the next render, like, you know, the component re-renders next iteration mein you see the updated value. So when you put it over here only, वो दिखेगा नहीं. So it's always a good idea to stick to, you know, this way, so that even if the next re-render पे होगा तो we get redirected properly. Okay, now we moving to home page. Home page पे आ रहे हैं हम लोग. Okay, so I hope this is clear. Abhi will continue. We'll see few more things. Okay. All right. So if you have seen the assignment that is given, how many of you guys saw the assignment, by the way? So let's just open and see some of the functionalities we can take from here. Okay, so we'll change the name from ticket, from task to ticket. Okay, we'll have these pages also. लॉगिन फंक्शन, लॉगआउट फंक्शनैलिटी हमने किया था, लॉगिन फंक्शनैलिटी हमने कर लिया है, राइट? नाउ वी विल फोकस ऑन दीज पेज, टिकट पेज, and how to build it, what to do, okay, all those things. So now I'll have to make certain changes, so I'll just call it tickets page. Okay, task की जगह उसको tickets बुला रहे हैं आपसे, tickets page. ओके, राउट्स में भी और लिंक में भी दोनों जगह विल अपडेट इट. टिकट्स, आई विल जस्ट कॉल इट टिकट्स. So there's no task, only tickets now. Okay, and link maybe will update. Okay, I've updated the actual name tickets, and I've updated it over here tickets, and I'll update it in the link as well. So it's tickets now. Routes में, links में, and actual page में. We've changed it at 3 places. Okay, fine. So if we come back here, so there is this tickets page. All right. So yeah, let's continue. By the way, I'm not planning to do every single thing that is there here. Okay, ये से ये problem भी मैंने ही set किया है. So you are expected to do some of the things also. Okay. So someone is saying, you know, logout functionality, logout should not be visible where, वो मैंने ही लिखा है. You are expected to complete it. छोटा सा conditional rendering लगा के भी वो manage कर सकते हो. So yeah, please do the task. Okay, fine. Let's continue. Now, we'll work on tickets page. So till the time we complete, I don't want it to, you know, I want to keep logged in value true, because बहुत बार मुझे बार बार login करना पड़ेगा. So for that reason, I'll just keep logged in value as true only. Okay. बाद में whenever before deployment, we'll change it. Okay. Now tickets page. Okay. So what I want to do in a tickets page, let's see. So this page should have a button at the top. Okay, we'll also include few more pages called create ticket, view ticket, edit ticket. Okay, so this page में there should be a button called create ticket. Okay, which should redirect to tickets create page. Okay, इसमें ना tickets दिखने चाहिए कार्ड के फॉर्म में, और लार्ज स्क्रीन एंड अबव में 3 कार्ड्स होने चाहिए, 2 कार्ड्स फॉर मीडियम स्क्रीन, 1 कार्ड फॉर स्मॉल स्क्रीन. हर टिकट में
there should be title, status, priority. इसके अलावा भी कुछ और चीजें होंगी, like description, assignee भी, that okay, these are the 5 entities that each ticket, एक पर्टिकुलर टिकट में ये वैल्यूज होने चाहिए: टाइटल, डिस्क्रिप्शन, असाइनी, स्टेटस, प्रायोरिटी। इसके अलावा एक आईडी आ जाता है बेसिकली। ओके, तो टिकट्स पेज, ठीक है, विल बिल्ड दिस। ईच कार्ड शुड हैव, ओके, ये टिकट पेज में जो कार्ड दिखेगा उसमें सारे प्रॉपर्टीज नहीं दिखेंगे, उसमें बस टाइटल, स्टेटस और प्रायोरिटी दिखेंगे बेसिकली। अगर आप कोई भी लिस्टिंग पेज ओपन करोगे, राइट, जैसे कि लेक्चर्स लिस्टिंग पेज है, राइट, तो यहाँ पे सारे लेक्चर के सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है बट सारे इंफॉर्मेशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दैट लेक्चर। बट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इन द लेक्चर डिटेल्स पेज, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। उसी तरह we will try to build something in here wherein basically listing page में you show some of the information, not all the information, but when a user clicks on view, right, we move user to ticket view page और ticket details page, और वहां पे आपको you'll be able to see all the details. Okay, now there should also be 3 select buttons, basically उसमें sorting and filtering भी करना होगा। okay, and basis this the ticket should also be updated। ठीक है, we need to build something like this, but another thing is we do not have backend, right? So we'll use JSON server as a fake backend। Everybody know what a JSON server is? सबको पता भी है, right, what JSON server is? Yep, जैसे टू डू लिस्ट है वैसे ही मैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग टू डू लिस्ट आई वांट टू मेक इट अ लिटिल better version of to do list। That's what a ticket is। Ticket basically means wherein you as a manager assign tasks to your people whoever are working with you, right? जैसे अगर आप GitHub में भी ओपन करोगे तो you'll have projects, right? उसमें आपको इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। So if you create a new project, okay, so you can see backlog, ready, in progress, review। so इस तरह you can create tickets। so उसी तरह का एक ticket feature basically we are building a ticketing feature, an application which has ticketing feature in it। All right, let's move back to this, all right, so everybody knows what a JSON server is। let's continue। So we'll also build a JSON server wherein we can store the information with respect to tickets, tickets, all the, we don't have a database, we don't have a server. So JSON server will act as a server, okay? Till we learn backend, we'll just focus on, like we'll just have this fake backend used, okay? All right. So इसके लिए, let's open this up, this uh, backend, voila. Also, I need to, here we'll run a JSON server, okay? db.json, all right, we'll create db.json, यहाँ पे हम लोग create कर लेते हैं, और also be a minute, why? So yeah, we'll run db.json is here। We need to create basically tickets। Tickets will be something like this, should have ID, okay, एक एक टिकट का एक ID होगा,
And let's just quickly write down this information. जैसे हमको उसमें और क्या क्या चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, असाइनी, स्टेटस, प्रायोरिटी. ओके, टाइटल. ओके, complete nav bar. Okay, so you're assigning some tickets, so that's a title. Description. Description में nav bar, feature, logout, ऐसा कुछ है. Build a logout button within nav bar. That's a feature that some assignee has to build. Okay, assignee assignee will be somebody. Let's say Rahul is that assignee. Okay. Status and priority. Status. Status can be pending. Status can be progress. Status can be completed. Okay. So we'll have to select one of these status. Pending रखते हैं. Or apart from that, priority. Okay. So priority will be a number. Okay. So it can be from 0 to 9. Okay, 0 is the lowest priority, 9 is the highest priority. So ticket priority is basically number, let's say. Okay, so this is something that we need to build. Let's say, let's do one thing. Let's use ChatGPT. Uh, Name property. Let's give 4 or 5 such names. Okay, Sakshi, some names, right? Saharan, hmm, Abdul, hmm, Varun. Okay, and yeah, fifth one is Rahul. So priority can be from 0 to 9. Anything else? Status, status can be pending, progress, or completed. Yeah, I think these should do. Title and description can be any task, any fake task given to assignee, coding wise. Yeah. Let's just generate some data. Then we'll start using this. Okay, there you go.
So we have this information. Okay. And npm run, sorry, JSON hyphen server watch dp.json, and let's just run this. Okay, so now we have this tickets available at localhost 3000. Let's just keep it here. So yeah, here's the data. And now I'll use this API endpoint. This will be my API endpoint from now on. Okay, chalo, let's continue. Let's build things. Now that we have backend set, we will just build a front end for this. Okay, so we'll have tickets, right? So tickets page here is where I'll have to get the tickets and display those tickets, right? तो टिकट्स पेज में पहले तो एक बटन होगा टॉप राइट में विच विल रीडायरेक्ट टू टिकट्स क्रिएशन पेज. ओके, सो यहाँ पे राइट में विल जस्ट शो अ टिकट क्रिएशन पेज. Okay, we'll just have a button which will redirect to ticket creation page. Okay, so there's a button that we need to create. All right, so button create tickets. Okay, so there's a button called create tickets, and this is a variant equal to outline. Color scheme is red. Okay, all right, so here we have that. I'll just use this one because there's a lot of moving from one place to another place. So I'll stick to this. Okay, ठीक है. But इसको थोड़ा सा we'll have to reduce the size so that I understand exactly how will it look in big screen. Okay, fine. Create tickets, and let's say I want it on the right side. So let's just go to Chakra UI. Let's okay. So let's do one thing. Isco, we'll put it in flex. Direction. Is there a property called direction? Yes, direction. We'll just say row reverse. And yeah, that goes on that side. Okay. So yeah, this is on to the left hand side. Maybe I also want to have a container, means this everything that I do in tickets page, I want to have a certain container. For example, what does that mean? So if you observe over here, right? Me show me. If you observe, let me use the annotation and show this. All the content centrally aligned है and it's occupying a certain width. उससे बाहर नहीं जा रहा, right? So we're keeping in the middle and we're restricting it to certain, you know, width. That's done using container. So we'll also do it over here. Okay, we'll restrict it by using container. So I'll import something called container from Chakra UI, and अगर मैं उसको यहाँ पे रख दूँ तो now you see it's not crossing a certain width. Okay, so I'll just mention how much that maximum width should be. I'll just say container dot lg. Okay, this is the maximum, let's say, they can use. So if I just go to style this system and यहाँ पे default theme पे okay, container, there is something called Excel also, so I'll just use Excel container.xl.
a certain width. That's basically what 1280 pixel is what I'm sticking to. Okay, great. So we have this. Okay, fine. Now I'll just, there's no need of additional box there, so I'll just remove that. Let's come back to this question. यहाँ पे क्या लिखा था कि इसमें टिकट्स डिस्प्ले करेंगे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कार्ड. ओके, तो कार्ड कैसे होता है बेसिकली इस तरह. विल जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ अ कार्ड. ओके, इस तरह का एक कार्ड बना के विल डिस्प्ले द टिकट. ठीक है. तो विल इंपोर्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, और यहाँ पे विल जस्ट मेंशन टिकट कार्ड. और हम लोग एक कार्ड यहाँ पे, लेट्स डू वन थिंग, एक एग्जांपल उठा के यहाँ पे रख लेते हैं. So this I'll just put here. Okay, so I need to import few more things. तो वो भी import कर लेते हैं. सारे चक्रा यूआई के ही है, so you shouldn't be having 2-3 of these. So कोई एक में ही move किया. And let's import heading. और क्या import करना है? Stack divider. Okay, stack divider. Okay, text. Now you understand the benefits of Chakra UI. Like I'm not building from scratch. I'm just using to some extent, the existing code. All right. Now I need to display this. Also, this clicking on this button should move a user to creation ticket creation page. Okay. So we haven't created that page. We also need to create that page. By the way, I'll also remove some of these things that now. तो तीन और पेज होंगे. क्रिएट पेज, टिकट create page, ticket view page, and ticket edit page. Okay, so let me just create those 3 pages. पहले तो I'll just call it create ticket, or ticket create, should make more sense. Ticket create.jsx, ticket edit.jsx, एक और होगा ticket view.jsx. बेसिकली यहाँ पे if you observe, right, problem listing page, so we'll have ticket listing page. यहाँ पे आप देख सकते हो there is a button called create problem, जहाँ पे when you go there is a list of form elements जहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो. तो उसी तरह का फंक्शनैलिटी हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पे हम व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम. और ये हो गया व्यू प्रॉब्लम, व्यू टिकट जो है ना, इस जिसमें आपको प्रॉब्लम, इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम दिख रहा है, उसमें आपको टिकट दिखेगा बेसिकली, व्यू टिकट. और देर इज एडिट टिकट, राइट. तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो एडिट फंक्शनैलिटी मिल जाती है टिकट की. तो डिलीट करोगे तो डिलीट फंक्शनैलिटी, बेसिकली ऑल द डिफरेंट CRUD ऑपरेशंस बोलते हैं इसको. क्रिएट समथिंग, रीड समथिंग, अपडेट, डिलीट, all of those operations will do. Okay, fine. I hope that made sense. So we are just building that kind of a functionality. Okay, now create ticket के लिए create ticket वाला पेज होगा. Okay, तो यहाँ पे there will be a function called ticket create. अभी के लिए we'll just write ticket create. Okay, जब टाइम आएगा we'll also build this. फिलहाल के लिए I'll just say ticket create. Okay,
there's another function, ticket edit. Ticket view. So I did not write function, ticket view. तो 3 नए पेजेस क्रिएट किए हमने, तो वो नए पेजेस को ऑल राउट्स में तो भी ऐड करना होगा, राइट? तो ऐड कर लेते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्राइवेट राउट्स. सो यहाँ पे विल इंपोर्ट पेजेस फोल्डर से, विल इंपोर्ट टिकट व्यू पेज. Okay, so there is ticket edit page, there is ticket view, ticket edit, and ticket create. 3 pages. Okay. Ticket create. Okay, तो स्लैश टिकट स्लैश क्रिएट, अगर ये पाथ है तो वी शुड डिस्प्ले क्रिएट टिकट, राइट? अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, you see it over here, स्लैश प्रॉब्लम स्लैश क्रिएट में जा रहे हैं, राइट? तो उसी तरह स्लैश टिकट स्लैश क्रिएट, तो दैट विल गो टू क्रिएट पेज. उसी तरह हम लोग भी बना लेंगे फंक्शनैलिटी. ठीक है, टिकट क्रिएट पेज शुड बी दैट वे, एंड dynamic routes will be introducing here. We'll just say slash ticket slash view, और यहाँ पे id ऐड कर देंगे, and in that case we'll show ticket view page अगर view करना है, and edit अगर है तो slash ticket slash edit, तो in that case we'll display ticket edit page. अगर व्यू करने देखेगा, he has to pass the id slash ticket slash view, और जो भी वो टिकट का id है has to pass, एंड देन टिकट व्यू आएगा और टिकट एडिट फंक्शनैलिटी आएगा. अभी हमने ये बनाया नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज. लिंक्स हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट सपोज टू बी इन द नैप बार. ये नैप बार का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग लिंक्स नहीं ऐड करेंगे. ओके, ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू दिस, एंड यहाँ पे लेट्स रिफ्रेश. ओके, सो देर इज सम मिस्टेक. एडिट में जाने के बाद वी डिड नॉट राइट फंक्शन नेम हियर. ऑलराइट, हाँ. तो नाउ अभी मैं अगर क्लिक करूंगा टिकट पे, इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज हमने वो फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, राइट? क्रिएट टिकट, यहाँ पे आई से ऑन क्लिक. ओके, ऑन क्लिक एक फंक्शन होगा जो कॉल होगा. ऑलराइट, सो आई मेंशन इट ओवर देयर. वहां पे मैं मेंशन करूंगा कि अच्छा, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से यूज नेविगेट, और नाउ कॉन्स्ट navigate equal to use navigate. So now I can use this navigate function and then redirect user to ticket slash create. तो जब ये क्लिक करेगा यूजर स्लैश टिकट स्लैश क्रिएट, वो टिकट क्रिएट पेज पे चला जाएगा. मेक सेंस एवरीवन? ओके, फाइन. उसी तरह नाउ वी हैव टू लिस्ट आउट द टिकट, बट ठीक है, उससे पहले want to put some margin. Okay, margin y, I'll just say 8. टॉप से थोड़ा सा
नीचे will get this create ticket. ठीक है. Y means y axis, like vertical direction पर. अब ये ऊपर भी उतना स्पेसिंग और नीचे भी स्पेसिंग मेंटेन कर लेगा. Both like margin top and margin bottom basically. Add हो गया. ठीक है. This is done. Now we need to list out the tickets, right? तो that's what we were doing. तो टिकट कार्ड जो है ना, राइट, सो विल बिल्ड दिस बट थोड़ी देर में. फर्स्ट हम लोग ना विल फेच द डेटा एंड उसको पहले विल पॉपुलेट इट, विल जस्ट गेट द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. अब वो डेटा लेने के लिए वी नीड यूज इफेक्ट, राइट. रिएक्ट वाले लाइब्रेरी से आई वुड नीड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. तो यूज स्टेट ले लिया मैंने, यूज इफेक्ट ले लिया मैंने. ठीक है. दो पर्टिकुलर फंक्शंस ले लिया. तो नाउ आई मेंटेन अगेन नेटवर्क रिक्वेस्ट इन्वॉल्व है, तो मैं लोडिंग स्टेट मेंटेन करूंगा. ओके. बाय डिफॉल्ट जो फॉल्स रहेगा, मैं डेटा भी मेंटेन करूंगा. सो दिस विल बी टिकट्स, राइट. सेट टिकट्स एंड standard thing use state, or here we'll start with an empty array. Okay, I'll also close this one. Abhi we'll have a bigger view. We'll also have error state, set error state, and I'll just say use state of false. We have loading and tickets and error state, तीन states maintain करेंगे. Okay. Use effect, right? Use effect. As soon as the component mounts, I want to make a network request. Okay. Basically fetch and update data. I'll just call this function. I'll create this function called fetch and update data. Asynchronous function rahega, async function. So we'll add try catch block also. If it goes in catch block, okay, we will set like first we'll start here और हम लोडिंग को ट्रू कर देते हैं. okay. एंड यहाँ आने के बाद we'll have to, we also need Axios, तो Axios को भी import कर लिया हम. That's it. And यहाँ पे we will set so we'll have to make a network request here. So we'll just say let response equal to await Axios. Okay. Method is get method है. Okay. And URL is, let's get the URL http localhost 3000. ओके. सो वो URL ले लिया हमने, लेट्स से. And we get the data, let data equal to response dot data, and we will set loading back to false, and we will set tickets जो है ना उसको वो डेटा से सेट कर देंगे. अगर कैच ब्लॉक में जाएगा दैट मीन्स एरर है, तो इन दैट केस लोडिंग को हम लोग फॉल्स कर देंगे. विल सेट लोडिंग टू फॉल्स एंड वी विल सेट एरर, एरर जो है उसको ट्रू कर देंगे. ऑल राइट. सो लेट्स जस्ट चेक ओवर हियर all the things. Loading, error, so we'll have error state, tickets. Okay, so that will be tickets that gets populated. ठीक है. अभी इधर it will be little congested, so I'll just open the bigger screen for better visibility. Okay. Now as soon as I load, initially both were false, you know, loading and error were false. Loading became true, and then
loading became false and we populated the data, we got the tickets. तो हाँ, काम कर रहा है, वी आर गेटिंग द डेटा, राइट. इवेंचुअली टिकट्स वैल्यू पॉपुलेट हो जाएंगे और वी गेट दोस 10 आइटम. ओके. सो अच्छा, ऑलराइट. नाउ बेसिस दिस इंफॉर्मेशन, अगर लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग इंडिकेटर दिखना होगा. अगर टिकट्स आ गए तो टिकट्स तो वैसे भी दिखेंगे. अगर एरर ट्रू है तो विल शो एरर इंडिकेटर, राइट. तो you can also add that information. So there can be a loading indicator that you can create. So अभी तो आपके पास चक्रा यूआई है, राइट. तो इसमें आप वो स्पिनर या कुछ भी, whatever you want, right? So you have the spinner that you can basically use to populate. So if I take that out, sure, I'll just import spinner and loading indicator की जगह we will display that spinner. Okay, we'll mention the size to be Excel. We'll use this one with some properties. Okay, so now we'll display this loading indicator here. We just say if loading is true, return loading indicator. If error is true, we'll display some kind of an error message. So that will be error indicator, correct? तो वो error indicator भी लिख लेते हैं. So इसमें if you go down, there are alert, huh? So we can use this alert. Let me take these informations and put it here. And ये alert वाला दिखा देंगे हम लोग. We'll just say error indicator is this, and alert title will be error. And यहाँ पे हम लोग just saying something went wrong. Now, if error is true, we'll return error indicator. These can be separate components. So components tab में we can move this loading indicator. We can also move this error indicator over there. Error indicator. Yeah. So this loading indicator, let's move it over here. Oops. Export default function, and we have to also import this spinner, which comes from Chakra UI. So I'll just say Chakra UI / React, and यहाँ पे spinner निकाल will keep it. Okay. Error indicator की जगह we'll just get this error indicator और यहाँ पे रख दिया. And we need to get this 4 things. Okay. From Chakra UI React क्या क्या लेना है हमको? हमको basically alert icon, alert title, alert description. We need to take out these things. Okay, so we are exporting it और यहाँ पे import कर लेंगे loading indicator and error indicator, दोनों यहाँ पे import कर लेंगे. So we'll import loading indicator from components नाम के folder में. There is this loading indicator. So error indicator,
where from components folder there is this error indicator. So we're importing this. Now these are not required here, so इसको remove कर दिया. Now if the tickets are there, right, if the response is successful and we get the tickets, so we'll map through and we'll basically create cards. Now I can keep this for the time being here. ठीक है, यहीं पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए. But उसके बाद we'll just move it to a separate component altogether. ठीक है. So each time we just go through tickets dot map and go through each of the ticket. Okay. And basically each ticket ka will create ticket card. And you can see for 10 tickets, you're getting 10 cards like this. Okay, one below the other, there's no format. Okay, एक ही नीचे एक, you're getting these tickets. Let's keep this on the sidebar. ऐसे रख लेते हैं. Components यहाँ पे let's get that tickets page. हाँ, तो हमारे पास वो 10 आइटम्स आ रहे हैं और बेसिकली टिकट की जगह टिकट कार्ड नाम का कंपोनेंट है वो जा रहा है. टिकट कार्ड में वी हैव दिस. ओके, क्या क्या चीज प्रॉपर्टी की तरह आ सकती है यहाँ पे? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, असाइनी, स्टेटस, प्रायोरिटी. ओके, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, असाइनी, स्टेटस और प्रायोरिटी. क्या हमको वो सारे डिटेल्स इसी में बताने? लिस्टिंग पेज में तो हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन बताते हैं ना जनरली. तो हमने प्रॉब्लम में क्या डिसाइड किया था, क्या क्या बताएंगे? So here we open the problem statement. We will display title, status and priority. तीन चीज. Okay, title, not description obviously, status and priority. Okay, title यहाँ पे आ जाएगा, right? So let's say वहां पे हम लोग वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे एंड वी विल रिट्रीव इट हियर. टाइटल और स्टेटस और प्रायोरिटी. Okay, so here heading में will display the title. Okay, then here we need heading and text, or yeah, so we'll just say status is the heading and whatever the exact status is that will come here. And there is something called priority, so we'll add that also, priority, and value will be in the text box. Priority. Okay, this last section is not required. Let's go remove. Oops, this last section we can just remove. Okay, now we need to pass the information. यहाँ पे can I just do this? Ticket spread कर दिया. So now you see each of the ticket. Okay, navbar feature logout. Status is pending. Priority is 0. Implement dark mode. Progress. Priority. But feature wise, we still have to work a little bit, right? तो यहाँ पे we can have 3 cards per row, 2 cards per row, 1 card per row. तो उसके लिए कल हमने एक कंपोनेंट देखा था, इफ यू रिमेम्बर, सिंपल ग्रेड, राइट? नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम लोग मेंशन कर देंगे तो वी कैन इजीली बिल्ड दैट, राइट? स्पेसिंग भी हम लोग मेंशन कर देंगे एंड अगर उसके अंदर रख लेंगे this particular thing if we keep inside simple grid. So let's import simple grid. Okay, and wrap it up here.
Okay, we'll put simple grid ऐसे and put tickets component inside that. And यहाँ पे मैं mention करूँगा columns actually. You have to mention columns and spacing. Okay, तो मैं mention करूँगा columns equal to 3, spacing equal to 10. Okay, और we not passing key attribute, इसीलिए वो आ रहा है. अगर हम लोग यहाँ पे की एट्रीब्यूट पास कर देते हैं ticket dot id करके, तो that goes away. And now it is already looking beautiful. मैंने ज्यादा कुछ काम भी नहीं किया, बस एक simple grid ऐड कर दिया, तो automatically it start to look good, isn't it? See how Chakra UI makes it very easy to build components, or it's very easy to build UI. इससे पहले कि मैं कुछ करता भी, with small amount of code, we were able to build such a beautiful website, right? Isn't it amazing? I mean, think about it. Like, how much time would you have spent on CSS to build a card like this? Okay. तो अभी इसको एक और फंक्शनैलिटी, like I want to show 3 cards, 2 cards, 1 card based on the screen size. मेरे को ये change करना है, right? Otherwise, it's not looking great. Based on the screen size, I wanna display 3 cards, 2 cards, 1 card. All I have to do is now I can just say base में एक दिखाने चाहिए, for medium screen 2, for large and above it's 3. That's it. You just have to add, breaking points. And now you see 1 card if it is smaller screen. Medium में you have 2 cards, 3 cards for large and above. Perfect. All right. What else is required here? और क्या क्या करना होगा? Okay. So each card, okay, each of this ticket card should have this. Okay. Um, Apart from that, we need to also have view button that takes us to ticket view page. हमने वो बटन एक ऐड करना है, तो let's add that button. तो I'll just go to card and इसके footer में I'll add that button. Okay, so let me see where we have used card footer. ये रहा. Card footer. Card footer ले लेते हैं. And let's put it here. And now if I open this, so here we have this button. Okay, variant, I want it to be outline, I want it to be red, and the text should be view ticket. There you go. हो गया view ticket. And when I click on it, I should go to ticket view page. So I'll add a click functionality, and यहाँ पे मैं mention कर दूंगा कि on click navigate to slash ticket slash view slash your ID. Okay, so I need to also pass like destructure and take out ID and pass. Now ये navigate नाम का component यहाँ तो है नहीं, like I'm in ticket card, right? तो यहाँ भी अपने को use navigate use करना होगा. तो const navigate equal to use navigate, or then I can use navigate here also.
तो टिकट के सारे डिटेल्स यहाँ पे भेजे. आई वॉज एबल टू रिट्रीव हियर एंड आई वॉज एबल टू डिस्प्ले दोज इंफॉर्मेशन. नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन ईच ऑफ द टिकट, I'll go to ticket view page. वो भी हो गया अपना functionality. We were able to complete that also. Now this ticket view page, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है, सो ये यहाँ नहीं रह सकता, इसको अपने घर जाना होगा. करेक्ट. तो इसको I'll create a component called ticketcard.jsx, right? तो ये सारे export default function ticket card, and here I will import from Chakra UI / React, basically like इसमें जो भी requirement है. So what I'll do is मैं सारे भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे. जो नहीं चाहिए I'll get it, I'll remove. मेरे को use navigate भी चाहिए from React Router DOM library, so I'll import it here, use navigate also. खत्म. We're able to create it. Now I can import, जैसे हमने loading indicator import किया वैसे ही components में there is ticket card जो हमने import कर लिया. अभी ये सारे यहाँ पे important नहीं है, so you can remove. See, done. So we were able to redirect. Now we need to have some buttons for sorting and filtering. Okay, select buttons होंगे, दो होंगे basically, not three. तो एक बटन जो है ना, which will sort by priority with values low to high, high to low, filter by status with values pending progress completed. okay? दो सेलेक्ट बटन बनाने को बोल रहा है. एक में जो है ना ऐसा होगा टेक्स्ट के सॉर्ट बाय प्रायोरिटी करके, और एक में ना फिल्टर बाय स्टेटस करके होगा जिसके वैल्यूज ये होंगे. ये प्रायोरिटी के हिसाब से टिकट्स को सॉर्ट करेगा, 0 पहले आएगा, 1 ऐसे लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से यू कैन फिल्टर सॉर्ट इट आउट. एंड ये स्टेटस के हिसाब से अगर आप पेंडिंग सेलेक्ट करोगे तो सारे पेंडिंग वाले आ जाएंगे, प्रोग्रेस सेलेक्ट करोगे तो बस प्रोग्रेस वाले फिल्टर आएंगे, एंड कंप्लीटेड पे कंप्लीटेड वाले आएंगे. So this will do that. Okay, we have to implement this functionality. Okay, before we do that, yeah, I'll continue for some more time. तो उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं. तो now the time is 9:07. 5 minutes from now, 8, 9, 10, 11, 12. So 9:13 को we will meet again. 5 minutes you have. Go take a break. Okay. Will not be pushing anything. थोड़ा सा we'll do more. Okay. Today we'll try to complete this project. So yeah, we'll try to do that. Okay. Class is going very fast. Yes, that is intentional by the way. वो intentional ही था. Okay. तो ये वाला क्लास बेसिकली कंसेप्ट रिलेटेड क्लास नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, राइट. एंड now that you are familiar with React, right? So now that you are reading, doing this for the second time, right? तो रिविजन हमेशा कॉलेज में भी हो कहीं भी हो थोड़ा सा एक्चुअल सेशन से फास्ट ही होता है. okay, so yeah, it is intentional. So anyways, we are still going. I don't think we're going fast or anything. It's just that you are not practicing अभी. when you practice it you will understand it. okay, अगर आपको सेशन के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वीडियो को पॉज करके आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो you will get a better understanding. That's all I generally say, right? So yeah, so people who were able to do that does not have any problem with the session because they have practiced enough. And there is no other thing except for practice. When you practice it, so you'll get a better understanding. That's how it is. All right. So
Now it's already 9:09, तो 9:15 को we'll start again. All right, let's continue. Okay, so abhi we have to implement sorting and filter functionality in our tickets page, right? So there should be a basically a select button जहाँ पे आप sort भी कर पाओगे. Okay, so select button. Let's get a select button that we can use. Okay, so we'll use this select button. All right, so we need to import select from Chakra UI and then we can use. Okay, fine. So here create ticket के नीचे and इसके ऊपर we'll put that select, okay, that we have taken out from Chakra UI. Okay, तो यहाँ पे वो select option आ गया. All right. So what I'll do is I'll basically put it here only. There should be two select buttons, so I'll keep two of these. So it shouldn't be with create ticket. अच्छा. Hmm. Hmm. Yeah, let's say three items in this, but why are line center? But yeah, I think we need this to be in a separate row. Like it, I think it's a better option if we just move it here only. No problem. I'll just create a new flex and यहीं पे add कर देते हैं. Or we can do something. Yeah, I think this should be fine. Or we could just use H stack maybe. Anyways, multiple options. We could do whatever you want. Flex line cent or we, let's say we use H stack. I think it's better option. H stack. हाँ. तो H stack में basically आप stack H horizontal stack और H stack. अगर आप H stack में इन को रैप कर दोगे तो H stack एंड यहाँ पे आप स्पेसिंग मेंशन कर दोगे स्पेसिंग इक्वल टू 4 खत्म. So they have some equidistant spacing and yeah, there you go. Or यहाँ पे if I just say margin Yankee 4, so there will be a, yeah, we have one select button here, second select button here. Okay, so the first one which I want to work on is the sort wala thing. But before that, understand how the API works. Okay, हम पहले API कैसे काम करता है एक बार चेक कर लेंगे quickly. So I hope you know वो होगा JSON server works. अगर आप sort में जाओगे इसमें तो this is how you write basically sorting here we have sorting wala. Think this is वो version stable version ये रहा पीछे वाला. So this is the stable version. So इसमें if you see sort, so here you can see दो चीजें ऐड करनी होंगी आपको sort के लिए, underscore sort and underscore order.
वैल्यू जो है ना, किस बिना पे, किस बेसिस पे आप सॉर्ट कर रहे हो और किस तरह सॉर्ट करना चाहते हो। किस बेसिस पे मतलब वो क्या पैरामीटर है जिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे वो क्या पैरामीटर है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बेसिस पे मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, राइट। और ऑर्डर क्या होगा, दैट कैन बी सिलेक्टेड इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग में, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ओपन दिस अगेन, इसको लास्ट में लगा लेते हैं। लोकल होस्ट 3000 पे हमारा बैकएंड चल रहा है स्लैश टिकट्स पे। ओके, ग्राफ देखोगे तो ये बेसिकली करंट वैल्यूज ये हैं, राइट। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं, क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर सॉर्ट, और यहाँ पे इफ आई मेंशन कि किस बिना पे, इफ आई मेंशन प्रायोरिटी बिकॉज इसके बिना पे हम मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट मेंशन प्रायोरिटी एंड अंडरस्कोर ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जीरो के बाद अगर वन रहेगा तो वन वाले वैल्यू आएंगे, वन के बाद टू वाला वैल्यू आएंगे एंड सो ऑन। अभी देखो, आइटम विद आईडी वन आ गया, प्रायोरिटी वन वाला सेकंड में आ गया, आइटम विद आईडी सिक्स था वो, प्रायोरिटी थ्री, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री फोर। तो आप देख सकते हो प्रायोरिटी इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है। अगर इसको डिसेंडिंग करूंगा तो प्रायोरिटी नाइन वाला पहले आ गया, 8 7 6 5 4 3 2 1। सो इस तरह यू नो यू कैन यूज दिस एपीआई अंडरस्कोर सॉर्ट, और किस बिना पे सॉर्ट करना है दैट इज प्रायोरिटी, यू विल राइट दैट। ऑर्डर, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करना है कि असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करना है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, लाइक ये पर्टिकुलर एपीआई इस तरह आप सॉर्ट कर सकते हो। अभी फ्रंट एंड में, oops, why is it looking this way? I think I, oh, 200 रखा हुआ है, ठीक है। तो नाउ here we'll have, yeah, there are too many open tabs, मैं थोड़े बहुत क्लोज कर लेता हूँ अभी, otherwise I'll keep getting confused all the time। हाँ, तो ये इसमें सॉर्ट बाय प्रायोरिटी, ठीक है। सो इसका नाम, ये फर्स्ट वाले का सॉर्ट बाय प्रायोरिटी, वैल्यू जो है ascending descending, ascending is basically low to high, that's what ascending is, right? High to low is descending, so high to low, descending। अब यहाँ पे इसका स्टेट मेंटेन करूंगा ये सिलेक्ट वैल्यू का, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू सेट सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख देते हैं। अब यहाँ पे वी राइट टू एट्रीब्यूट्स, राइट। एक तो होता है वैल्यू जिसमें हम लोग पास करेंगे सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू, एक होता है ऑन चेंज, जब ये चेंज होगा तो क्या होना चाहिए। सो ये फंक्शन कॉल होगा सेट सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो हमने सिलेक्ट ऑप्शन से वो सेट स्टेट वैल्यू को चेंज करने का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, यहाँ पे आते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार जो हमने फंक्शनैलिटी बनाई है वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंपोनेंट्स टैब में आया मैं, और यहाँ पे टिकट्स में जाने के बाद अभी सेवेंथ वाला स्टेट जो है ना ये एम्प्टी दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो असेंडिंग आ गया, हाई टू लो सेलेक्ट किया तो डिसेंडिंग आ गया। अच्छा, तो ये काम कर रहा है, ओके। बट हाँ, ये अपडेट नहीं हो रहा है उसके हिसाब से बिकॉज वी हैवंट पास्ड इट, राइट। तो अगर मैं ये एपीआई यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ ऐसे, सो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे।
अगर इसको असेंडिंग कर दूं तो आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में है अभी। बट हमको ये डायनेमिक वैल्यू है, राइट, ऑर्डर वैल्यू, सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू बताना है। तो क्या मैं सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे पास कर सकता हूँ? पेजिनेशन में हमने इस तरह का किया था, राइट। तो अगर मैं सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू एक डायनेमिक वैल्यू पास करता हूँ जो जो कभी भी स्टेट चेंज हो तो वापस कॉल करेगा ये फंक्शन को, नया डेटा आएगा एंड हम लोग टिकट वापस वो नए डेटे पर, नया डेटा पे सेट करेंगे। सो ऐसा करने से आप देख पाओगे यहाँ पे, राइट। तो इफ आई कम बैक हियर नेटवर्क टैब में, लेट्स री ऑल्सो इसको निकाल देते हैं मोबाइल वाले को एंड लेट्स रीलोड वंस। हाँ, तो इनिशियली जब हुआ था ऑर्डर हमने पास ही नहीं किया, ओके, तो नॉर्मली काम कर रहा था, देयर वाज नो सॉर्टिंग और एनीथिंग लाइक दैट। बट द मोमेंट आई सिलेक्टेड लो टू हाई, एक एपीआई रिक्वेस्ट किया एंड सॉर्ट इक्वल टू प्रायोरिटी, ऑर्डर इक्वल टू असेंडिंग, जब मैं इसको चेंज करूंगा now order is descending, so you can see a new API request with new data and it got populated। तो इस तरह आप सॉर्ट कर सकते हो एंड आपका यूआई भी अपडेट हो गया बेस्ड ऑन दैट सॉर्टिंग। प्रायोरिटी के बिना पे हमने सॉर्ट करके दिखा दिया। उसी तरह फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं, राइट। फिल्टर पे आप किस तरह का फंक्शनैलिटी लगाओगे? फिल्टर बाय स्टेटस, कि अगर मैं पेंडिंग ही सिलेक्ट करूँ, अगर मैं प्रोग्रेस ही सिलेक्ट करूँ, अगर मैं कंप्लीटेड सिलेक्ट करूँ, तो मेरे को खाली पेंडिंग वाले टू डू टार टिकट्स दिखने चाहिए, प्रोग्रेस वाले ही दिखने चाहिए, कंप्लीटेड वाले ही दिखने चाहिए अगर मैंने कंप्लीटेड सिलेक्ट किया। तो इस तरह का एक फिल्टर बना लेते हैं। तो प्लेस होल्डर में सिलेक्ट बाय स्टेटस डाल दिया और इसमें वैल्यूज क्या क्या आएंगे? प्रोग्रेस, पेंडिंग, कंप्लीटेड, ये तीन ही तो है एपीआई में, राइट। स्टेटस इज पेंडिंग या तो कंप्लीटेड या तो प्रोग्रेस, ऑल स्मॉल लेटर्स। हाँ, तो यहाँ पे सेकेंड फिल्टर वैल्यू ले लेते हैं, सेट फिल्टर वैल्यू, यूज स्टेट और करंटली विल कीप इट एम्प्टी। ओके, तो फिल्टर कैसे होता है बेसिकली? अगर आप जेसॉन सर्वर में देखोगे तो फिल्टर इस तरह कर सकते हैं, किस बिना पे, मतलब वट एवर द की वैल्यू इज। अब इसमें की वैल्यू हमको किस फिल्टर पे, स्टेटस वाले पे करना है, राइट। तो स्टेटस हो गया हमारा की वैल्यू, हो गया वट एवर वैल्यू वी पुट इन। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो दिख रहा है ना, सो दिस इज लाइक किस बिना पे फिल्टर करना है वो मेंशन करोगे आप, उसका वैल्यू क्या है। तो हमारे एपीआई में हम कुछ इस तरह करेंगे अगर फिल्टर करना होता तो क्वेश्चन मार्क स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग। तो अभी चार ही आ रहे हैं जिसका स्टेटस पेंडिंग है, सारे वैल्यूज नहीं आ रहे हैं। सी, अगर स्टेटस में प्रोग्रेस रखूं तो तीन आइटम है जिसका स्टेटस प्रोग्रेस है और वही दिख रहा है। अगर मैं कंप्लीटेड रखूंगा तो वो फिल्टर्ड आइटम आएंगे कंप्लीटेड में। अब ये सॉर्ट और फिल्टर दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं बेसिकली। अगर आप एंड लगा दोगे तो अभी देखो तीन पैरामीटर्स है, एक तो हमको बस कंप्लीटेड वाले आइटम्स दिखाई दे रहे हैं और
प्रायोरिटी के बिना पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, 8 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया। अगर मैं इसको प्रायोरिटी वाइज असेंडिंग कर दूं तो लोअर टू हायर, प्रायोरिटी टू एंड देन 8। अगर मैं इसको प्रोग्रेस कर दूं तो यू सी 3, 6, 7 और स्टेटस ऑल ऑफ देम आर प्रोग्रेस ओनली। तो फिल्टर एंड सॉर्ट कैन वर्क टुगेदर इन दिस वे। तो यहाँ पे इनिशियली एम्प्टी है, राइट, सेट फिल्टर वैल्यू। तो उसी तरह आई कैन जस्ट से वैल्यू इक्वल टू filter value on change set filter value to e dot target dot value। और जब ये फिल्टर वैल्यू चेंज होगा तो हम लोग वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे फिल्टर वैल्यू। और ये ले लिया हमने और यहाँ अपडेट कर दिया से। तो ऑर्डर की जगह सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू लिखा था हमने, राइट। सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू, ये फिल्टर की जगह ये जो प्रोग्रेस है कांस्टेंट वैल्यू को निकाल के डायनामिक वैल्यू फिल्टर वैल्यू पास करेंगे हम लोग वहाँ पे। filter value, filter value, and that filter value is passed there। Okay, तो now you see कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे एम्प्टी पैरामीटर्स पास कर रखे हैं, राइट। देखो फिल्टर फिल्टर में मैंने कुछ पास ही नहीं किया, स्टेटस इक्वल टू कुछ पास ही नहीं किया। तो यूआरएल को उस हिसाब से चेंज भी कर सकते हो आप। आपको यूआरएल भी चेंज करना होगा थोड़ा सा, नो। कैसे कर सकते हैं? सी, लेट यूआरएल इक्वल टू, नो, इफ कंडीशन लगा के अगर फिल्टर है तो ही ये वैल्यू ऐड होगा, वरना इसको रिमूव करना होगा। या फिर एक और तरीका है विच इज मोर बेटर ऑप्शन, सारे क्वेरी पैरामीटर्स आप मेंशन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो कौन से हैं? जैसे है ऑल्सो अंडरस्कोर स्टेटस आएगा आई गेस, सॉरी सॉरी माय बैड, ये यहाँ पे एक अंडरस्कोर स्टेटस होना होगा ना। हम्म, ये क्वेश्चन मार्क ही दे रहा है ये। क्यू इक्वल टू इंटरनेट एंड, नहीं नहीं, दैट्स नॉट एन इशू आई गेस। तो बेसिकली एक्सियोस में ना, एक्सियोस डॉक्यूमेंटेशन में आप क्वेरी पैरामीटर्स इस तरह पास कर सकते हो। क्वेरी पैरामीटर्स, सारे क्वेरी पैरामीटर्स आप जस्ट बेस यूआरएल ऐसे लिखने के बाद आप क्वेरी पैरामीटर्स पैरम्स नाम के एक ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हो। ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज, फर्स्ट इज स्टेटस क्वेरी पैरामीटर ऐसे रख लो। एंड अगर इफ यू नो फिल्टर वैल्यू एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप क्वेरी पैरम्स में, राइट, क्वेरी पैरम में यू कैन जस्ट ऐड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड, का नाम क्या है, प्रोग्रेस।
status. Query param dot status value will be filter value. ऐसे if conditions ऐड कर सकते हो. If their sort order value है, no, it's not an empty string, तो underscore sort underscore order ये दोनों ऐड कर सकते हो. Underscore sort is priority, underscore order is sort order value. तो now you don't need to pass this. ये string थोड़ा confusing रहता है, right? तो अभी params करके you can just pass query params. अगर होगा तो वो क्वेरी पैरामीटर ऐड होगा. अगर फिल्टर वैल्यू एम्प्टी नहीं कुछ वैल्यू है तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा. तो नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड. बहुत क्लीन भी है, और इस तरह से लिखोगे तो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा. तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, बट आई फील के ये वाला अप्रोच बहुत आसान है. अभी सारे क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू की तरह एक ऑब्जेक्ट की तरह जाएंगे. अगर वैल्यू है तो ही वो ऐड होगा, वरना नहीं ऐड होगा. तो अभी अभी अगर आप देखोगे, let's reload. And why is this 200%? Let's change. Okay. So initially everything like you can see, but tickets पे we are hitting, we're getting the response. तो now अगर मैं sort करने लगा, तो you can see sort equal to priority, order equal to ascending ऐड हो गया, order is equal to descending हो गया for the next one, 987 ऐसे ऐड हो गया. सो अगर मैं फिल्टर ऐड करूंगा, which I haven't updated, but let's also do that first of all. इसको अच्छा मैंने उसका नाम नहीं चेंज किया, बस प्रोग्रेस पेंडिंग, एक और लास्ट है कंप्लीटेड. ठीक है. ठीक है. तो नाउ अगर मैं प्रोग्रेस सेलेक्ट करता हूँ तो प्रोग्रेस के ही कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिसका स्टेटस प्रोग्रेस है. और आप देख सकते हो इट्स हाई टू लो, 7 से 6, 6 से 3. नाउ इफ आई चेंज दिस अगेन, तो क्वेरी पैरामीटर ऑल्सो गेटिंग अपडेटेड. तो इस तरह आप सॉर्ट और फिल्टर फंक्शनैलिटी एक साथ कर सकते हो, राइट? अगर आप वेबसाइट्स में देखोगे तो बेसिकली लिस्टिंग पेज में यही सब तो होते हैं, राइट? दे गिव यू ऑप्शंस टू सॉर्ट फिल्टर ऐसे. ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी आपको देते होंगे ऑप्शंस, राइट? प्रोडक्ट्स पेज में अगर आप जाओगे तो यू हैव ऑप्शन टू सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. एंड नाउ अगर आप फिल्टर ऐड कर लोगे कि कलर ब्लैक ही चाहिए, तो यू कैन सी सॉर्ट एंड फिल्टर दोनों एक साथ दे आर वर्किंग टुगेदर. So we were able to build that kind of a functionality here, wherein sort filters working together. Yeah, I hope it makes sense. All right, so let's just push this one and we'll continue to also include create ticket page or view ticket page. ये दोनों बना लेते हैं. Okay, we're able to do that. I think pretty much we were able to do all the things that it says. Right. So first we'll just push this to GitHub maybe first of all. Tickets listing page completed, and yeah, listing page completed with sort, filter, and
functionalities. Okay, so let's just come here and okay, all right. npm run there. All right. So we were able to complete the listing page. Abhi we will focus on let's say ticket creation page. उसके बाद we'll focus on ticket view page. Okay, one at a time will do. All right. Is everyone clear? Perfect. So if you have not understood, someone says के query parameter का they had some they weren't able to understand the query parameter part. तो एक ऑब्जेक्ट है क्वेरी पैरामीटर. अगर ऑब्जेक्ट में वी आर एडिंग अ की वैल्यू, कब ऐड करेंगे हम लोग? अगर फिल्टर वैल्यू एम्प्टी नहीं है, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, तो हम लोग स्टेटस ऐड कर रहे हैं. स्टेटस नाम का एक की ऐड कर रहे हैं क्वेरी पैरामीटर में. वैल्यू क्या होगा? जो भी सिलेक्ट किया यूजर ने. ओके, स्टेटस में अगर यूजर ने वो सिलेक्ट बॉक्स के जरिए प्रोग्रेस सिलेक्ट किया है तो ये ऐड हो जाएगा. ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ रहा है. अगर सॉर्ट ऑर्डर वैल्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक, मतलब कुछ वैल्यू है, ये नहीं है एम्प्टी नहीं है, कुछ वैल्यू है, तभी बेसिकली यहाँ पे आप वही कर रहे हो कि अगर एम्प्टी ना हो तो अंडरस्कोर सॉर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर ऐड कर रहे हो. प्रायोरिटी अंडरस्कोर ऑर्डर जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया है, असेंडिंग यूजर हो तो असेंडिंग, डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग. ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है क्वेरी पैरामीटर. एक्सियोस का डॉक्यूमेंटेशन बोलता है कि अगर कोई भी क्वेरी पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल ये सारे क्वेरी पैरामीटर्स हैं, राइट, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आते हैं इन सबको क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं. आई होप एटलीस्ट यू नो दैट. ये क्वेरी पैरामीटर्स आप एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी मेरे को पास कर दोगे. ठीक है, ऐसे पैरम्स करके उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना. वो बोलता है कि अगर पैरम्स करके की में आप ये सारे क्वेरी पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मेरे को पास कर दोगे तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. तो स्टेटस इक्वल टू प्रोग्रेस अंडरस्कोर सॉर्ट इक्वल टू प्रायोरिटी ऑर्डर इज इक्वल टू असेंडिंग. हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पैरम्स नाम के की में भेज दिया, तो यहां से हटा के यहां पे रख दिया. क्यों ऐसे किया? क्योंकि बेसिस द चेंज, नो, स्ट्रिंग में मेंटेन मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है. अगर ऐसे रहा तो इजीली पढ़ भी पाते हैं, राइट. यहाँ देखने पे हमको लॉजिक समझ में आ जाता है कि अगर अच्छा फिल्टर वैल्यू है तो ऐड करना है, वरना क्वेरी पैरामीटर में वो होना नहीं चाहिए वैल्यू. तो दैट्स व्हाई मेक्स इट मोर इजी टू रीड एंड राइट. अगर ये ना होता तो आप वो हर क्वेरी पैरामीटर लाइक यूआरएल को ना बहुत सारे कंडीशंस के हिसाब से मैनिपुलेट करते. दैट्स इट. परफेक्ट, यू गॉट इट, ग्रेट. मेरी मेहनत चीज हो गई. फाइन, लेट्स मूव ऑन. लेट्स कम बैक.
हाँ, तो what I was saying is कि now we'll focus on creation of a ticket, right? उसके बाद we'll also try to complete the ticket details page. Okay, चलो, we'll do that now. क्रिएशन में we'll have to have a list of empty input boxes जहाँ पे हम लोग एक नया टिकट भी क्रिएट कर पाएंगे। और हम जब वो टिकट अपडेट, बेसिकली क्या होगा कि अभी हमारे पास सर्वर भी है, राइट? सो नाउ सर्वर को ऐसे लिख लेते हैं, ये रहा सर्वर जहाँ पे अब हमारा डेटाबेस भी है, राइट? सो अभी वो फेक डेटाबेस है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हियर इज वेयर आवर डेटा लाइज, राइट? सो सारा डेटा यहीं पड़ा है। और हम जब यहाँ से अपडेट करेंगे कुछ भी, नो वी ऐड अ न्यू टिकट, लेट्स से, ओके, हमने लेट्स से एक नया टिकट ऐड कर लिया, तो एक रिक्वेस्ट जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट, जो यहाँ पे वो डेटा पॉपुलेट भी करेगा, राइट? जो भी अपडेट होगा वो डेटा यहाँ पे पॉपुलेट भी होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट से विल पॉपुलेट दैट डीबी ऑल्सो, सो दैट ऑलवेज यहाँ पे अपडेटेड डेटा हो, एंड वही डेटा हम लोग वापस फेच करेंगे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे बेसिकली, राइट? विल क्रिएट अ टिकट बेसिकली मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर के पास से बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लेंगे, जैसे कि टिकट किस चीज़ के बारे में है, ऑल द डिटेल्स, लाइक क्या क्या डिटेल्स लेना होगा हमको। यहाँ पे लिखा है, राइट? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, असाइनी, स्टेटस, प्रायोरिटी, ये सारे डिटेल्स यूजर के पास से ले लेंगे, और जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये डेटा को डेटाबेस में ऐड कर देंगे, राइट? तो वही करना है हमको, बस और कुछ नहीं। लेट्स डू दैट। तो अभी टिकट्स क्रिएट पेज बस ऐसे बता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल build, okay, a page wherein we'll have all the input boxes. This page यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है ना उसके सारे इंफॉर्मेशन, सो लेट्स सी। टिकट क्रिएट पेज should have these things, ऑलराइट? ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पॉपुलेट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, सो लेट अस बिगिन। हम लोग चक्रा यूआई से विल टेक आउट कंटेनर, ठीक है? और हमको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इनपुट बॉक्स फॉर टाइटल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, वो इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। लार्ज साइज का ही ले लेते हैं इनपुट बॉक्स। ओके, तो आई नीड टू इंपोर्ट दिस इनपुट बॉक्स, और ये स्टेट भी तो मेंटेन करना है, ये सारे यूजर से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं टू सेव इट, राइट? तो आई इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे भी मेंटेन दिस इंफॉर्मेशन। सो टाइटल, सेट टाइटल, ओके, सो वैल्यू इक्वल टू टाइटल से सेट कर देते हैं, ऑन चेंज इवेंट आ जाएगा हमको, सेट टाइटल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हो गया हमारा पहला इनपुट बॉक्स। प्लेस होल्डर इसका क्या रहेगा, एंटर टाइटल, ठीक है? तो ये रहा एंटर टाइटल, ये फर्स्ट इनपुट बॉक्स है। उसी तरह वी हैव टेक्स्ट एरिया फॉर डिस्क्रिप्शन। अब चक्रा यूआई में यू हैव समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट एरिया आल्सो, आई गेस।
हाँ, टेक्स्ट एरिया, इसमें बड़ा वाला इनपुट बॉक्स बेसिकली, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, टेक्स्ट एरिया। ओके, तो इसमें copy this and put it here, क्रिएट टिकट, एंड ये रहा वो इनपुट बॉक्स जो हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। सो दैट डिस्क्रिप्शन, और इनिशियली लेट्स कीप इट एम्प्टी। यहाँ आने के बाद जैसे साइज इक्वल टू LG और MD सेल, वैल्यू इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ऑन चेंज। ये भी इनपुट बॉक्स की तरह ही काम करता है। सो जो इनपुट बॉक्स में करते हैं यहाँ भी कर सकते हो आप। सेट डिस्क्रिप्शन टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बट बहुत कंजेस्टेड है, राइट? एवरीथिंग इज अलाइनिंग टू वन अनदर। तो वी स्टैक यूज करके हम लोग इसको प्रॉपरली स्टैक कर सकते हैं। तो स्टैक ये बहुत काम आता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट? तो ये वी स्टैक है जिसमें आप स्पेसिंग 4 देकर मैनेज कर पाओगे। बेसिकली आपको वी स्टैक नाम का कंपोनेंट उठाना है, और यहाँ पे अगर आपने वी स्टैक यूज कर लिया और थोड़ा सा स्पेसिंग मेंशन कर दिया, बाय डिफॉल्ट भी वो स्पेसिंग देता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख लेता हूँ, और मार्जिन यानी कि 4, थोड़ा सा मार्जिन भी रख लेता हूँ। ओके, सो यू कैन सी हाउ, या, इट लुक्स ग्रेट। एंटर टाइटल, एंटर डिस्क्रिप्शन। और क्या चाहिए हमको? सिलेक्ट बॉक्स टू सेलेक्ट, असाइनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए स्टेटस प्रायोरिटी, 3 सेलेक्ट बॉक्स चाहिए होंगे हमको। ओके, तो ले लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ आने के बाद विल जस्ट गो टू सिलेक्ट। इसमें लार्ज साइज वाला सिलेक्ट ले लेते हैं। ओके, एंड वो ऑप्शंस भी ऐड कर देंगे। ऑलराइट, सो अपने पास सिलेक्ट बॉक्स भी आ गया। ऐसे 3 सिलेक्ट बॉक्स चाहिए होंगे हमको, 1 2 3। ओके, पहले वाला सेलेक्ट बॉक्स किसके लिए है? असाइनी के डिटेल्स के लिए। ओके, सो विल आल्सो राइट दैट सेम थिंग। असाइनी कौन है? असाइनी में हम लोग क्या क्या डिटेल्स लिख सकते हैं, वो डीबी और जेसन में भी वैसे भी हमने डिसाइड कर रखा है ना कि असाइनी 5 लोग हो सकते हैं, राहुल, साक्षी, वरुण, अब्दुल और सहारन। ओके, तो वो लिख लेते हैं, राहुल, साक्षी, वरुण, अब्दुल, सहारन। ओके, खत्म। सो वी विल एबल टू क्रिएट इट। अब इसको स्टेट में मेंटेन करना है। विल जस्ट से असाइनी, सेट असाइनी, यूज स्टेट, इनिशियली एम्प्टी रखते हैं।
तो यहाँ पे वी हैव टू वैल्यू इक्वल टू असाइनी और ऑन चेंज set assignee to e dot target dot value. Okay, so the next one is वो सिलेक्ट बॉक्स क्या करेगा, स्टेटस के लिए है. okay, नेम ऑफ असाइनी रहेगा इसमें. तो एक और सिलेक्ट बॉक्स जहाँ पे हम लोग स्टेटस मेंटेन करेंगे. तो स्टेटस सेट स्टेटस यूज यूज डेट ऑफ. हाँ, तो नाउ इसका प्लेस होल्डर होगा स्टेटस. ऑलराइट, वैल्यू सेल जी. एंड ऑप्शंस आर, क्या क्या ऑप्शन है स्टेटस के लिए? कंप्लीटेड, पेंडिंग या प्रोग्रेस हो सकता है. ये तीन ही स्टेटसेस होंगे, राइट? तो कंप्लीटेड होगा, या तो प्रोग्रेस में रहेगा, या तो पेंडिंग में रहेगा. तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे, पेंडिंग, प्रोग्रेस, कंप्लीटेड. पेंडिंग, प्रोग्रेस, कंप्लीटेड. उसी तरह हमारे पास उसको सबमिट भी तो करना है. वैल्यू इक्वल टू स्टेटस ऑन चेंज, हम यहाँ बता रहे हैं सेम थिंग. इवेंट मिल जाएगा आपको, सेट स्टेटस टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. उसी तरह लास्ट वाला क्या है अभी? यू हैव प्रायोरिटी. ओके, प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, यूज स्टेट, एंड इनिशियली एम्प्टी रहेगा. इसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 to 9 से कोई भी वैल्यू हो सकता है. ओके, तो प्रायोरिटी value equal to priority on change, set priority, oops, set priority to e dot target dot value. But ये values basically string आएंगे, तो I'll convert it into a number before saving it. Okay, so values are going to be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There you go. हाँ, तो प्रायोरिटी भी हो गया. देन जस्ट अ बटन विच सबमिट्स अ फॉर्म, क्रिएट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू अपडेट द टिकट. बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाना है अभी. एक टिकट क्रिएट टिकट करके विल हैव अ बटन. ओके, जो बटन है यहाँ मिल जाएगा.
create ticket on also variant equal to outline, color scheme equal to red। तो जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, हैंडल क्रिएट टिकट करके एक फंक्शन होगा जो कॉल होगा। ओके, तो ये फंक्शन हैंडल क्रिएट टिकट जो है बेसिकली न्यू टिकट। ओके, न्यू टिकट में क्या क्या होंगे? एक तो टाइटल होगा जो यहाँ से लेंगे हम लोग, एक दो डिस्क्रिप्शन होगा जो यहाँ से लेंगे, असाइनी होगा जो फिर यहाँ से लेंगे हम लोग, एक स्टेटस होगा जो कि स्टेटस जो हमारे स्टेटस यहाँ पे स्टेट में है वो ले लेंगे। देन प्रायोरिटी होगा, वो प्रायोरिटी ले लेंगे हम लोग। तो ये न्यू टिकट हमको नेटवर्क रिक्वेस्ट करना है, तो एसिंक अवेट तो लगेगा। एसिंक लाइक इट शुड बी एन एसिंक फंक्शन। नेटवर्क रिक्वेस्ट अगर करना है तो विल मूव इट देयर। एंड अगर एरर आएगा तो विल जस्ट डिस्प्ले इट अभी। हियर विल मेक अ रिक्वेस्ट, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेथड इज पोस्ट, यूआरएल विल बी, वो यूआरएल क्या था उसका, लोकलहोस्ट 3000/tickets। एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाया जाएगा। अगर मेरे को कुछ डेटा भेजना है, राइट, एक्सियोस के डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर कुछ डेटा भेजना है तो डेटा नाम की की में इसे भेज सकते हो आप। यू कैन पास एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। मेरे को कुछ डेटा भेजना है, तो वो डेटा है बेसिकली ये न्यू टिकट नाम का ऑब्जेक्ट जो है। ओके, सो विल जस्ट कंसोल लॉग द रेस्पॉन्स नाउ। ओके, होने के बाद एक्सियोस तो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया, तो उसको इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग बस प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे आएगा, उसके हिसाब से विल मॉडिफाई। ओके, तो हियर एक और बार db.json देख लीजिए। 10 वैल्यू नो आइटम विथ आईडी 10 इज द लास्ट वन। ठीक, तो हम लोग एक नया बनाएंगे अभी, और आई ऑल्सो ओपन कंपोनेंट्स में जाकर टिकट क्रिएट वाला। ठीक है, तो हमारे पास 5 वैल्यूज दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो मैं टाइटल अपडेट करता हूँ कि क्रिएट फुटर लोगो अपडेट हो रहा है, क्रिएट कंपनी लोगो ऑन फुटर एज वेल। ठीक है, वो भी अपडेट हो रहा है स्टेट में। तो मैं ये वरुण को असाइन किया हूँ, इसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा ऑब्वियसली, और प्रायोरिटी इसका ना 2 है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है, मैं अभी नेटवर्क रिक्वेस्ट किया मैंने, एक पोस्ट रिक्वेस्ट गया विद दिस पेलोड, ये जो इंफॉर्मेशन था वरुण को जो मैंने टिकट असाइन किया था, एंड इट वाज सक्सेसफुल, वी गॉट अ रिस्पॉन्स बैक। आईडी 11 से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो फुटर जो मैंने अभी क्रिएट किया था, एंड इट गॉट असाइन टू वरुण एंड ऑल द डिटेल्स आर अपडेटेड। तो हमने डेटा, ये तो डेटाबेस है राइट, db.json तो अपना, तो हमने डेटाबेस को पॉपुलेट कर पाए, वी वर एबल टू सक्सेसफुली पॉपुलेट द डेटाबेस विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, तो नाउ कंसोल डॉट लॉग में भी आप देख सकते हो, कंसोल लॉग में ये दिख रहा है, दिख रहा है स्टेटस 201, मतलब सक्सेसफुल हो गया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 हो गया। तो मैं यहाँ पे इफ आई मेंशन कि if it is successful,
create a just do one thing, navigate कर लेना. Let's use import navigate from React router DOM और use navigate, sorry. तो use navigate यूज करके const navigate इक्वल टू use navigate, और यहाँ पे वो फंक्शन मैंने इन्वोक कर लिया. अगर सक्सेसफुल है तो आई कैन गो बैक टू स्लैश टिकट्स, राइट. एक और बार क्विकली चेक कर लेते हैं कैसे काम कर रहा है. विल क्रिएट वन मोर nav bar logo. ओके, तो टिकट क्रिएट पे आते हैं एंड वी आर हियर. nav bar logo, create nav bar logo, whatever. Assignee is Abdul, status is progress, status is whatever, pending से राइट शुरू करेंगे ना. तो I'll put 7 as a status. So we click on it, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट गया, so we were able to add a new information, or we were, and we also redirected user here टिकट्स पेज पे, तो हमारा न्यूली अपडेटेड टिकट भी अवेलेबल है. we were able to complete all the things. अभी व्यू टिकट पे ये यूज पैरम से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट. सो /12 वाला इंफॉर्मेशन यूज पैरम से ले सकते हो, यूआरएल में जो आईडी है उसको रिट्रीव कर सकते हो. तो हम वही करेंगे बेसिकली. हाउ डू यू अपडेट द आईडी इन db.json? इफ यू हैव यूज्ड जेसॉन सर्वर, जेसॉन सर्वर में आपको आईडी पास करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये आईडी डेटाबेस क्रिएट करता है, नॉट जस्ट जेसॉन सर्वर. कोई भी रियल लाइफ डेटाबेस से भी अगर आप काम करोगे तो आईडीज यूजर नहीं बनाता, आईडी डेटाबेस बनाता है. ओके, चलो. द ओनली द थिंग दैट इज लेफ्ट इज अभी व्यू टिकट, राइट. व्यू टिकट में अपने को टिकट बताना है, अपने को एडिट फंक्शनैलिटी और डिलीट फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है. ठीक है, सो विल डू दैट. तो इट टेक सम टाइम, 10:30 probably it will take. Okay, so this will be your last PLC, so bear with me. I know, but हाँ ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक देता हूँ. 10:11 को will start again. Okay, go have water, whatever you want to do, complete, come back. 3 मिनट का ब्रेक. All right, let's continue. Okay, now the task is to build this, create this page, व्यू पेज, राइट. डिस्प्ले ऑल द टिकट, ऑल द डिटेल्स यहाँ पे बताने हैं हमको, लाइक every detail that is available, not just one or two. Every detail should be visible here, and it should also have what, it should also have edit button जो edit पेज पे जाए, delete बटन जो completely टिकट को delete कर दे, और it moves back to listing पेज जब वो टिकट delete हो जाए तो हाँ, we'll just do that अभी. okay, so view page पे we'll go. okay, I've created 05 branch, अभी यहाँ पे काम करेंगे हम लोग. now ये view page है. now if I want to retrieve something from here, हमें पता है कि यूज पैरम्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये डायनेमिक वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट. ऑल राउट्स में यहाँ पे हमने एक बोला कि देयर विल बी अ डायनेमिक वैल्यू. कोलन का मतलब ये है कि व्यू के बाद जो आएगा इट विल बी अ डायनेमिक वैल्यू. ओके, तो दिस वैल्यू कैन बी रिट्रीव्ड बाय यूजिंग यूज पैरम्स हुक. तो यूज पैरम्स हुक हमें रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से मिलते हैं. सो यहाँ से हम लोग वो यूज पैरम्स हुक ले लेते हैं एंड यूज पैरम्स हुक
जो कि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा, तो उससे आप आईडी रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप ये आईडी देखोगे, तो बेस्ड ऑन द टिकट, लाइक टिकट विथ आईडी 1, तो आपको 1 दिख रहा है। अगर आप कोई भी रैंडम टिकट उठा लो, उसका आईडी, राइट, जो भी है वो आईडी आप यहाँ पे रिट्रीव कर पा रहे हो। तो इसका मतलब, लेट्स से, जब मैं वो आईडी रिट्रीव कर लूँ, तो हमको पता है लोकल होस्ट, लाइक ये जेसॉन सर्वर में अगर मैं 1 करूँ तो मेरे को 1 के डिटेल्स मिल जाएंगे, 2 करूँ तो 12 करूँ तो 12 के डिटेल्स मिल गए, सी 4 करूँ तो 4 के डिटेल्स मिल गए। तो as soon as the component called, like this view page is mounted onto the UI, जब ये UI पे दिखाई देने लगेगा, ये वाला, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, राइट, तो आई कैन बेसिकली मेक अ नेटवर्क रिक्वेस्ट। और नेटवर्क रिक्वेस्ट किसको लूंगा? आइटम विथ आईडी 10 को रिट्रीव करने के लिए, और विच एवर आईडी इट इज, राइट। तो आई मेक अ नेटवर्क रिक्वेस्ट टू दिस एंड पॉइंट, get the data and display the data. Okay, all right. तो यूज ये एग्जैक्टली उस उधर भी इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो लोडिंग टिकट एरर हैगा। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास लोडिंग यूज स्टेट रहेगा। जो सिमिलर फंक्शनैलिटीज है उस पे, उसको थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो इफ यू सी ओवर हियर, लोडिंग एरर और टिकट्स, तो यहाँ पे भी उसी तरह विल हैव लोडिंग एरर टिकट्स। टिकट्स नहीं, टिकट होगा, बिकॉज ये सिंगल टिकट है, राइट। तो अरे नहीं, ऑब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज ये एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है। और यहाँ पे फेच एंड अपडेट डेटा है, तो उसी तरह हमारे पास भी हो सकता है फेच एंड अपडेट डेटा। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं भी मेंशन कर लेता हूँ फेच एंड अपडेट डेटा। तो हमारे पास कोई क्वेरी पैरामीटर्स नहीं है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। यूज इफेक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया, यूज इफेक्ट। ओके, सेट टिकट बेसिकली, और एक्सियोस भी हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो लेट्स इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, तो क्वेरी पैरामीटर्स हम नहीं यूज कर रहे, तो सारे निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी निकाल दो। ओके, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। Okay. Now, as soon as the component mounts, we call this function fetch and update data, जो loading को true set करेगा, then it will make a network request to slash tickets slash ID, right? Whichever the ID is. अगर ID 4 है तो 4 लिख लेते हैं। Then we get the data, और once we get the data, यहाँ पे we'll have to show that, right? तो टिकट कार्ड जो है ना, ये लाइक टिकट कार्ड जो है ना, उसी तरह का फंक्शनैलिटी यहाँ भी बना लेते हैं। विल ऐड मोर थिंग्स हियर। तो ये कार्ड बेसिकली यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑलराइट। तो टिकट कार्ड का, लाइक आई नीड दिस, तो ये भी ले लेता हूँ चक्रा यूआई से। आई नीड टू इम्पोर्ट लॉट दीज थिंग्स। ठीक है। एंड श्योर, नॉट देयर। हाँ, अब तो अभी वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ कार्ड। इसमें चेंजेस करेंगे थोड़े बहुत। लोडिंग एंड टिकट एरर स्टेट्स को हम लोग वो सेम यूज कर सकते हैं यहाँ भी फंक्शनैलिटी के। अगर लोडिंग ट्रू है तो रिटर्न लोडिंग इंडिकेटर। सो इंपोर्ट दैट लोडिंग इंडिकेटर एंड यूज इट, वो लोडिंग इंडिकेटर। अगर एरर ट्रू है तो वी कैन रिटर्न एरर इंडिकेटर, सिमिलरली हियर ऑल्सो। ओके। तो ये आईडी जो है, विल पास इट हियर, विल पास इट हियर,
and will pass it here. अभी यूज नहीं किया but will pass it and basically यूज ही कर लेते हैं ना, you know the logic here anyway. तो जो कोई आईडी यूआरएल से रिट्रीव किया हमने यहाँ पे पास कर दिया सो दैट आई गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टिकट. ओके, देन हियर बेसिकली हाँ ये सब निकाल लेते हैं. लाइक देयर इज नो प्रायोरिटी अभी. इट शुड वर्क. हाँ, तो अगर आप व्यू टिकट पे जाओगे अभी, लेट्स गो हियर व्यू टिकट, तो कुछ इस तरह दिख रहा है बेसिकली. सो एज सुन एज द कंपोनेंट माउंट्स, अच्छा यहीं पे देख लेते हैं. एज सुन एज द कंपोनेंट माउंट आइटम विथ आईडी 10 था, तो हमको उसके डिटेल्स मिल गए. एंड अभी यूआई पे दिखाई नहीं दे रहे हैं वो डिटेल्स, राइट. तो हमको डीस्ट्रक्चर करके ये सारा इंफॉर्मेशन निकालना है और इसको यूआई पे पहले तो पॉपुलेट करना है. ओके, टिकट में असाइनी डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें होंगी, राइट. तो क्या मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करके टिकट को can take out all the information, right? ID, title, description, और क्या है. देख सकते हो यहाँ पे आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक एक टिकट में और क्या होते हैं. सो देर इज असाइनी, स्टेटस और प्रायोरिटी, ये सारी चीजें हैं. ओके, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, स्टेटस की जगह स्टेटस है, प्रायोरिटी की जगह प्रायोरिटी आ जाएगा. डिस्क्रिप्शन असाइनी भी बताना है तो वो दोनों को ऐड कर लेते हैं. एंड आई गेस वी सॉर्टेड. ओके, तो एक और बॉक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बताने के लिए एक और ऐड करेंगे असाइनी बताने के लिए. ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर. हाँ, तो ये रहा अपना टिकट जिसमें हमारे पास इतने सारी इंफॉर्मेशन है. वी हैव टाइटल, स्टेटस, प्रायोरिटी, डिस्क्रिप्शन, असाइनी कौन था, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट. अगर कोई और टिकट ले लेंगे, जैसे कि लेट्स से ये वाला टिकट ले लिया, तो इसी ये अब्दुल असाइनी है एंड दीज आर द डिटेल्स. तो वी वर एबल टू मेक ए नेटवर्क रिक्वेस्ट टू आइटम विद आईडी. पहले हमने यूआई से लाइक यूआरएल से रिट्रीव किया वो आईडी वैल्यू को, एंड वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है ना, हमने उसको उठाया. network request, we made it to server, we got the data, and we kind of displayed that information here. All right, so let's come back here. यहाँ पे edit और delete बटन होंगे, राइट. तो वो दोनों ऐड कर लेते हैं, edit ticket और एक होगा delete ticket. ओके, तो एडिट में आप बेसिकली नेविगेट करोगे यूजर को, तो यूज नेविगेट के को निकालना होगा आपको. यूज नेविगेट const navigate equal to use navigate. और यहाँ पे जब कभी भी यूजर एडिट टिकट क्लिक करे, so we call this function and it's like a navigate user to slash ticket slash edit. राउट वही है ना उसका, स्लैश टिकट स्लैश एडिट स्लैश आईडी. तो स्लैश टिकट स्लैश एडिट स्लैश आईडी. तो जब कभी भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो एडिट पे चला जाएगा.
और डिलीट पे क्लिक करेगा तो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसमें कार्ड फुटर, ठीक है, एक स्टैक ऐड कर लेते हैं और ये बटन के बीच में थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, से पुट अ स्पेस, स्पेसिंग ऑफ 4, ये रहा थोड़ा सा गैप। डिलीट पे वी कैन मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट। ओके, तो आई कैन जस्ट डू वन थिंग, यहीं पे अल से हमारे पास डिलीट टिकट है, डिलीट टिकट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो फंक्शन का नाम है डिलीट टिकट, एसिंक्रोनस फंक्शन है बिकॉज इसको कंप्लीटली सर्वर से भी डिलीट करना है, राइट? तो ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा। और यहाँ पे विल से लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस। अभी मेथड गेट हो जाएगा, सॉरी अभी मेथड डिलीट हो जाएगा, राइट? गेट नहीं, वी हैव टू डिलीट दिस। तो यूआरएल बेसिकली विल बी दिस सेम आईडी, वही यूआरएल हो जाएगा ना, विल डिलीट इट। ओके, तो अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विच विल बी 200, राइट, अगर वो 200 हो गया तो वी बेसिकली नेविगेट यूजर टू होम पेज स्लैश टिकट्स पेज। तो देखते हैं डिलीट फंक्शनैलिटी काम करता है कि नहीं करता। आइटम विथ ID 4, के अब्दुल था सैनी इसका याद रखना। क्लिक ऑन डिलीट टिकट, देख सकते हो डिलीट फंक्शनैलिटी हो गया ना, आइटम गॉट डिलीटेड। अगर आप डेटाबेस में भी चाहोगे तो आइटम विथ ID 4 इज गॉन, 3 के बाद सीधा 5 आ गया, नॉट देयर इन द डेटाबेस, यहाँ भी नहीं मिलेगा, इट्स कंप्लीटली डिलीटेड। वही तो मांगा था एंड दैट इज डन। 200 मीन्स इट्स अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, मतलब जो हमने नेटवर्क रिक्वेस्ट किया था वो सक्सेसफुल हो गया। अभी बचा एडिट फंक्शनैलिटी, राइट? एडिट टिकट पे जाने पे वी बेसिकली नो गो टू दिस टिकट एडिट पेज। ओके, तो ये टिकट एडिट पेज पे भी आपको बहुत सिंपली समझाए तो ये ना दो का मेल है बेसिकली, व्यू टिकट पेज और क्रिएट टिकट पेज, ये दोनों का मेल है एडिट टिकट पेज बेसिकली। बिकॉज यहाँ पे भी आपको यूआरएल से रिट्रीव करना है बेसिकली आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल, और यू मेक अ नेटवर्क रिक्वेस्ट, यू गेट द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी किया है, तो वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ भी ले लेते हैं एडिट पेज पे भी। ओके, तो ये लेट्स से यहाँ भी द वी import some of this stuff। ओके, और चक्रा यूआई may not be required, इसके लिए we'll just remove this। हाँ, तो ये तो सेम रहेगा, वी मेक अ नेटवर्क रिक्वेस्ट तो ये भी सेम रहेगा यहाँ पे। ओके, एग्जैक्ट सेम फंक्शनैलिटी। लोडिंग एरर भी आप बता सकते हो तब तक, सो दैट विल ऑल्सो बी सेम। ओके, नाउ ये भी सेम रहेगा, टेक आउट दीज ऑल्सो। सो इसको डिस्ट्रक्चर करके यू कैन टेक आउट आईडी, टाइटल वगैरह वगैरह एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट्स सी इफ वी हैव दैट इंफॉर्मेशन और नॉट, उसके बाद कुछ करते हैं। ओके, सो राइट,
Okay, so we were able to get the data. Okay, कंसोल लॉग में बता देता हूँ. console.log of ticket. तो हर टिकट में we were able to get this information. Okay, तो वो ID का we were getting an error because we already used ID here. So we have to rename it. So ID can be named as, मैंने उसको बस रीनेम कर लिया, let's say ticket ID करके, if I have to use. ओके, सो वी गेटिंग द इंफॉर्मेशन. अभी अभी हमको बेसिकली क्या करना है कि वी वांट टू हैव अ एडिट पेज, राइट, जो कि क्रिएट पेज की तरह ही दिखता है. ओके, तो आई विल टेक ऑल दीज थिंग्स दैट एग्जिस्ट हियर. यहाँ पे जो है वो आई विल टेक इट हियर एडिट पेज में. ओके, क्रिएट पेज में बेसिकली you have used it. I think I have used it also imported. और ठीक है, तो we need these states. तो I'll take this information. यहाँ पे भी I would need all these states. Okay, loading error के साथ no form state values भी चाहिए होंगे, all these values. Okay, and अच्छा, so here ticket is a direct value that is put in. So no, this should not be the case. Wait a second. हाँ, इसका there are different ways in which you can do. Let's say mm, 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 mm. Let's not use this. So we can still use this values. Okay? ये सारा container के अंदर जो है vstack, we can still use this. Let's take this one first of all. Okay, ये container, I'll add it here. Okay, there is a small change that we may do, but pretty much it will look same. Okay, now set ticket is an object. Okay, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, set ticket will write and we'll just say for each time spread the previous value of ticket और title ऐड कर लेंगे. यहाँ पे भी सेम थिंग, set ticket और ऐसे e डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह we'll just have, because ticket अभी ऑब्जेक्ट है ना, तो description e dot target dot value. So this way we'll get all the information. Okay, तो here there is no set assignee. अभी बस एक ही टिकट में we'll put all the details ना. तो set assignee करके, sorry, set ticket is only what we have. उसी में there is a key called assignee that we will have. There's a ticket and assignee will be e dot target dot value. Similarly, this one will be set ticket and value will be previous values and status. And the last one, priority, again the same thing. Set ticket, priority, e dot target dot value.
sorry, this should be not priority, priority, and convert it into a number. Okay, so this will be edit ticket and edit ticket करके एक फंक्शन रहेगा which we need to create. यहाँ पे I'll create a function called edit ticket. ये ना async फंक्शन रहेगा because we'll make a put request here, right? तो console.log of error और यहाँ पे we'll just show console.log of ticket. Okay. हाँ, तो someone says something, ये session, IA is here, so we'll inform them, that there is a small delay. Okay, so don't worry too much about it. I'll complete it and then you can go to that session. Okay, I'll also pass the information after the session. I'll take 5 more minutes and then I'll wrap it up. ठीक है, तो ओनली चेंज दैट आई हैव डन इज यहाँ से हमने टिकट से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्चर किया एंड वी वर शोइंग दिस ऑन चेंज अभी। तो एक बार देख लेते हैं टिकट एडिट एंड यू कैन सी अभी कोई भी टिकट पे जाने दो। बेसिकली आई एक्सप्लेन द फ्लो अभी, प्रोडक्ट फ्लो। तो यहाँ पे अपना लिस्टिंग पेज है। तो when I go here, I'll reach that particular page, right? So when I click on edit ticket, we हमने एक रिक्वेस्ट की, बेसिकली वी मेड अ रिक्वेस्ट टू गेट द करंट टिकट विद ID2। वो रिस्पॉन्स मिला हमको, हमने वो रिस्पॉन्स लिया और सारे इनपुट बॉक्सेस को पॉपुलेट कर दिया वो रिस्पॉन्स से। सो इसी टिकट को हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके सारे वैल्यूज को पॉपुलेट कर दिया। अब चेंज कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट डार्क मोड की जगह अगर मैं इम्प्लीमेंट लाइट मोड लिख दूं, ठीक, तो आई एम एबल टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन, बट ये लोकल स्टेट में अपडेट हो रहा है, राइट? अगर आप देखोगे टिकट एडिट पेज, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चेंजेस हो रहे हैं, लोकली हो रहे हैं अभी तो फिलहाल। ओके, असाइनी को लेट्स से मैंने कुछ और पर्सन को, देखा अब्दुल को अब चेंज कर दिया, इन प्रोग्रेस की जगह इसको पेंडिंग कर दिया, प्रायोरिटी हमने लेट्स से इसकी चेंज कर दी। तो यू कैन सी ऑल दोज इंफॉर्मेशन इज गेटिंग अपडेटेड लोकली। जब मैं ये क्लिक करूंगा एडिट टिकट, तो आप यहाँ पे देखोगे that a new network request will be made, but अभी हुआ नहीं है because I haven't done anything. edit ticket फिलहाल क्या कर रहा है, edit ticket वाले इस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि बस कंसोल कर रहा है वैल्यू को। तो अब कंसोल लॉग में वो अपडेटेड वैल्यू दिख रहा है। अब ये वैल्यू, ये जो इंफॉर्मेशन है अपडेटेड टिकट, ये इंफॉर्मेशन मेरे को भेजनी है, राइट? ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मेरे को डेटाबेस पे भेजना है सो दैट द डेटा गेट्स अपडेटेड। ओके, तो लेट अपडेटेड टिकट इक्वल टू क्या क्या चीज, अब टिकट डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, जितने भी चीजें थी, राइट? सेम थिंग, न्यू टिकट जैसे क्रिएट करते हो आप वैसी तरह अपडेटेड टिकट भी क्रिएट करोगे। और द ओनली चेंज दैट यू डू हियर इज, आई शो यू, राइट? ये अपडेटेड टिकट भेजोगे और ये पुट रिक्वेस्ट हो जाएगा, और ये न्यू टिकट की जगह अपडेटेड टिकट भेजोगे, दैट्स इट। And when you do, and if it is successful, that's it, it gets updated. एक और स्मॉल चेंज रहेगा कि कौन सा टिकट भी तो इन्फॉर्म करना होगा, राइट? तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर दोगे कि item with ID4 is getting updated, whichever is getting updated you'll mention that. तो item with ID2 is getting updated, तो अभी नेटवर्क टैब में you can see नेटवर्क रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट गया था एंड इट इज सक्सेसफुल। बट हम लोग वापस नेविगेट क्यों नहीं किए, बिकॉज दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। व्हेन समथिंग गेटिंग अपडेटेड, अच्छा 200 होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ क्रिएशन, इट्स एन अपडेशन।
So if it is to now you see light mode लिख लिया, let's say अभी we'll update this. Okay, so let's say completed and priority was 6. Now you can see this item with ID2 ये payload गया था and it got updated, light mode आ गया and priority 6 हो गया. So whatever changes that you have done is being reflected here now. Uh, so that's basically edit. Okay, it's nothing but a combination of basically view page and create page. Basically post request की जगह हमने put request किया and we changed the updated the URL accordingly and we passed the updated ticket. So that's what we have built in today's session. All the functionalities, let's just quickly take a look. Okay, क्या क्या हमने किया है. So अभी context में जाके I'll again update it back to false. So we have everything. So हमारा एक application है जिसमें login page है. Okay, we'll also keep this onto the side. Okay, components में भी we should be able to see. हाँ, तो login, we have to log in. So I'll just log in with this email and password. Or ये locally will store it obviously. Okay, local state में. And once a user logs in, right, a token will be given to us from the API and user is logged in, right? So we store this information in the context. Is logged in or token, ये दोनों value हमने context में save किया. So now we will be able to, use any of these pages. Varna, if I log out, which will basically empty out things, right? I won't be able to access this page. अभी लॉग आउट करने के बाद मैं अबाउट होम या कोई भी प्राइवेट राउट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो आई वोंट बी एबल टू. So I need to be logged in order to access any of the page. And that's how we implemented it. We kind of maintained authentication details in context API, and each page basically gets rendered only when the authentication details are true. कि is logged in value अगर true है तभी दिखेगा. So we have a tickets page here wherein you get tickets, all the tickets gets rendered. हम लोग इसको फिल्टर भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन अगर प्रोग्रेस है या पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है, उस हिसाब से वी कैन ऑल्सो फिल्टर इट. वी कैन ऑल्सो एड सॉर्टिंग टू इट बेसिकली बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. अभी देखो प्रायोरिटी 1 2 6 and 8 लो टू हाई, high to low पे भी you can do. So you can do all these things. You'll also be able to create a ticket. For example, abhi in database we only have, let's say, 12 tickets. Now I can create a new ticket also. Creating new ticket. So this information we are storing it locally पहले तो. So okay, sample for creating new ticket. So you can see local store में we are able to store this information, and clicking on this basically will make an API request. You can see 201, a new API request was made with this information and it got populated. Database में ID 13 के नाम से एक नया ticket बन गया. We were able to create new information also in the database. Right now in the listing page, there's option to view page also. Okay. Let's just come here and remove this. So we were able to get into details like, ticket internally, like we are able to get into ticket details page. जिसमें as soon as the component is mounted, ये use param hook का इस्तेमाल करके हमने
यहाँ से आईडी उठाया, we made a network request, we got the data, and we displayed the information here. Delete करोगे तो it basically makes a delete request. As you can see over here, a delete request is made and the ticket is completely deleted from the server, and we have been redirected to slash tickets page because that's what the functionality is saying. तो उसी तरह वी कैन इवन एडिट द पेज। जैसे ही आप एडिट पेज पे क्लिक करोगे, वी मूव टू स्लैश एडिट स्लैश, जो भी पेज का आईडी था, जो भी टिकट आईडी था, दैट गेट्स एडेड हियर। नाउ एज सून एज दिस ticket edit page is open, again the same thing what we did in view page में जैसे URL से उसने ID उठाया, it made a network request to get the details with respect to ticket with ID1. And what did it do? It populated all the information here navbar में। कैसे? Because we basically here क्या किया हमने, जैसे ही हमको डेटा मिला, as soon as the component is mounted, जैसे हमको डेटा मिला वो टिकट का, हमने लोकल स्टोर में सेव कर दिया एंड उसको UI में पॉपुलेट कर दिया, वैल्यू इक्वल टू टाइटल करके, वैल्यू इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, बेसिकली टिकट डॉट टाइटल का जो भी वैल्यू था उसको यहाँ पे वी सेव्ड इट एंड वी सेड कि अगर चेंज करें तो अपडेट द लोकल टिकट वैल्यू। अब ये लोकली अपडेट हो रहा है, हमको तो इसको सर्वर पे अपडेट करना है। तो जैसे ही यूजर एडिट टिकट वाला बटन क्लिक करेगा तो ये एडिट टिकट फंक्शन कॉल होगा। एक नया सा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने जिसमें हमने वो सारा इंफॉर्मेशन वापस से लाइक एक जगह कोलेट कर लिया लेते, एंड देन हमने एक एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट किया। हमने बताया कि भाई ये जो अपडेटेड टिकट दिख रहा है ना, दिस विल बी आर दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू अपडेट, एंड जब ये अपडेट हो जाएगा, रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, यू नेविगेट बैक टू टिकट्स पे। So that's basically create, read, update, delete, and filter, sort functionalities. I'm telling you, if you are able to do this, जितना हमने किया, right? You know React basics. Okay, basics as in you should be able to build applications using React. अगर इतना आ जाए बहुत है to build any applications in React to get started. So yeah, I hope this session was helpful. I'll push the code. I'll add this repo link in the notes also. Have a look at it. Okay. All right. Let me stop sharing my screen. I see some. I think it's done. Yeah. Cool. Thank you so much. I'll stop recording.